Here in this part of the video beta, let me tell you the relation of endometriosis with infertility. Yes, endometriosis, it leads to infertility. In 30 to 40% of the female patients, if they have endometriosis, they become infertile. The question is why there is infertility in case of endometriosis. There are so many possible mechanisms which we will be discussing, but the thing is that the infertility in case of endometriosis is due to anatomical distortions. ये आपकी पेल्विस की ऑलमोस्ट पूरे पेल्विस की जो एनाटमी है बेटा वो काइंड ऑफ डिस्टॉर्ट हो जाती है इन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. तो pelvis is the site which should be really good, really healthy for safe sound pregnancy, successful pregnancy and fertility. But if there is anatomical distortion in the pelvis, so a pregnancy is going to be really harsh, really impossible. So there are anatomical distortions in the pelvis that may be periadnexal adhesions. The adnexal structure is the tube, the ovaries, the uterus. There are adhesions in between them. So how is it possible? Two things which are tightly adhered with each other, there is no loosening, no free mobility of the two organs, two portions, two tissues in the pelvis. So pregnancy is not possible then, right? So due to anatomical distortion with the periadnexal adhesions and the destruction of the ovarian tissue due to endometrioma. You remember in the ovary beta endometrioma is formed, जिसको हम chocolate cyst भी कहते हैं, ठीक है? And this is the cyst actually which can destroy the ovary. And once the ovarian tissue is destroyed, I don't think ovulation will be possible. And if the ovulation is not possible, there will not be any pregnancy, okay? And remember one thing, that the medical treatment of endometriosis does not improve fertility. But yeah, surgical ablation or the surgical excision can also improve the fertility along with endometriosis. सही है? Medical treatment can give you relief from endometriosis, but can't bring fertility back. Now let me explain you beta some possible mechanisms right away that can lead to infertility in case of endometriosis. One is, look, ovarian function is disturbed, tubal function is disturbed, the coital function is disturbed, and few more, due to which the pregnancy is not possible now. Ovarian functions that have been disturbed, that can lead to infertility in case of endometriosis include: number one, luteolysis, that is caused by elevated levels of prostaglandin F2. Prostaglandin F2 elevated in case of endometriosis leads to luteolysis, that is the breakdown of the corpus luteum. Do you think if the corpus luteum is broken down, it will give you progesterone anymore? No, it will not give you progesterone anymore. If the progesterone is not there, you think pregnancy will be possible? Not. Number two is the oocyte maturation defect. oocyte mature नहीं होगा तो बेटा अंडा नहीं बनेगा, अंडा नहीं बनेगा तो ओव्यूलेट नहीं करेगा, फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होगी. Endocrinopathy is some pathologies of your endocrine system which can alter the FSH LH levels, which can alter the estrogen progesterone levels. So in this case also fertility is not possible, there will be infertility. और एक syndrome है, that is the luteinized unruptured follicular syndrome, in which the follicles do not rupture, they become large cystic, and in that case also the fertility is not possible, my son. उसके अलावा altered prolactin release and anovulation. Anovulation seen in case of PCOS also. So if there is anovulation, the ova will remain inside the ovary, and if it remains inside the ovary and does not come out of it, then also pregnancy is not possible. Then comes the tubal function, which is also altered in case of endometriosis. दो चीज़ें हो जाती हैं ट्यूब के साथ. ट्यूब के बेटा जो फिम्ब्रिया होते हैं ना, जो oocyte को पिक करते हैं, that fimbria are impaired, right? There is actually impaired fimbrial oocyte pickup. Beta, this is the fallopian tube, and these are the fimbria of the fallopian tube, and this is the ovary which gives you egg, and that egg is actually picked up by the fimbria, and this picking up of the ova by these fimbrial ends of the tube, this function is impaired, right? And also the tubal motility is altered due to adhesions, okay?
If there are adhesions in the tube, it will be very much stable. It will not have mobility anymore. So the tubal mobility will be altered, right? Okay. Then comes the coital function. आपको पता है, मैंने पीछे भी बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस के केस में डीप डिस्पेरियूनिया होती है, यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स. So if the intercourse is painful, how the heck will two partners will meet? They will not. If they do not meet, is the pregnancy possible? Never. Another problem is related to sperm function. If let's suppose sperm enters into if let's suppose sperm enters into the female tract, in case of endometriosis, it will be destroyed. It will be destroyed by antibodies. It will be destroyed by antibodies, and it will also be destroyed by macrophages, which will phagocytose the sperm, right, and will lead to infertility. And the last thing is early pregnancy failure. If you are suffering from endometriosis and somehow you develop the pregnancy, that pregnancy will be lost in the early duration of the pregnancy. And it may be due to luteal phase deficiency. आपको पता है luteolysis होती है. So if the luteal phase is deficient, corpus luteum is not there, progesterone will not be there, and if the progesterone is not there, pregnancy is not possible, right? And also prostaglandin induced immune reactions which will destroy the fetal tissue, right? So this is how beta fertility is affected in case of endometriosis. Right after this is beta, we need to discuss the management of endometriosis. How can we get rid of this? We have two possible options. One is the medical therapy and one is the surgical therapy. Medical therapy, it includes analgesics and some other drugs. Analgesics are actually not for the treatment of endometriosis, obviously, but they are really good to reduce the pain associated with endometriosis. Obviously, there is lots of pelvic pain, lots of pain during intercourse, so you can take NSAIDs, right? NSAIDs reduce the severity of dysmenorrhea, that is the painful bleeding, menstruation, and the pelvic pain. And note one very important thing, that the additional use of codeine and the opiates should be avoided as it can worsen the coexisting irritable bowel syndrome. अगर मैंने बताया था ना पीछे बेटा कि एंडोमेट्रियोसिस की एक और कॉम्प्लिकेशन होती है, जब एडहेशंस बन जाते हैं तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी होता है. तो बस सिर्फ आप पेन को रिड्यूस करने के लिए एनसेड्स यूज़ करेंगे. कोडीन और एंड ओपियाट्स, दे आर आल्सो गुड फॉर रिलीविंग पेन, बट दे कैन वर्सन द IBS. So avoid using codeine and opiates. If you want to reduce the pain, go with NSAIDs, right? So many NSAIDs are there, the tramadol, the toradol, the diclofenac, and everything, right? So right after the NSAIDs were obviously to relieve the pain, but not to relieve the endometriosis. Some drugs that can bring some relief from endometriosis include COCPs, that are the combined oral contraceptive pills. Should be given only to the female patient with endometriosis who is not have some desire to get pregnant. क्योंकि बेटा COCP देने से आपकी एंडोमेट्रियोसिस तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको पता है COCP कंट्रासेप्टिव भी है. ऐसा हो कि एक फ़ीमेल पेशेंट ट्राई कर रही हो प्रेगनेंसी के लिए और आप उसको एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में COCP दे दें, तो उसकी एंडोमेट्रियोसिस तो सही हो जाएगी लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाएगी, ठीक है, बिकॉज COCP इज़ अ contraceptive as well. So if pregnancy requirement is not there, then only use COCP, okay? COCPs can reduce the endometriosis induced dyspareunia and dysmenorrhea and the non-menstrual pain, जो मेंसेस के अलावा दूसरे दिनों पे पेन होता है, मैंने पहले भी बताया था. So COCP, they are the combined oral contraceptive pills. They contain estrogen, progesterone both, and yeah, they can reduce the endometriosis induced dyspareunia and dysmenorrhea, okay, and they are more effective in alleviating pain if it is tricycled. अगर हम बेटा आपको पता है COCP कुछ इस तरीके से होती हैं कि ये 7 days and then this is used to be the pill free interval, ठीक है. There are 7 COCP, this is the pill free interval, or there must be the placebo, okay.
So this is how you do use. But if you tricycle the regimen of COCP, and if you avoid this pill-free interval, after getting done with this, then you continue with another 7 days sequence, then it will, alleviate pain. It will relieve the pain very effectively. Okay. Okay. Right, beta. Okay. And I hope you remember the mechanism of action of COCPs, that they are very much effective in not growing the endometrium. So if they inhibit the growth of the endometrium, the endometriosis will be relieved. And also, if you tricycle the use of the COCP, they will effectively alleviate the pain, relieve the pain, right? Okay. अगर आपको COCP से सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है बेटा, तो कंटिन्यू करते रहें COCPs को फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है. Otherwise you can shift to some other beta drugs, right? Okay. So if I summarize this portion, firstly आपने इंसेट्स ली, इससे पेन रिलीव हो गया, ठीक है. अगर वो तो बेटा पेन रिलीफ होगा. अब जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है जो दूसरी जगहों पे ग्रो हो रहा है, उसको सप्रेस भी तो करना है ना. एंडोमेट्रियल टिश्यू को सप्रेस करने के लिए क्या चाहिए? एंडोमेट्रियल टिश्यू को दूसरी जगह पे सप्रेस करने के लिए चाहिए कि आपका जो ईस्ट्रोजन है वो कंटेंट कम हो और प्रोजेस्टेरोन का कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है. क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ईस्ट्रोजन के ऊपर ऑन द एंडोमेट्रियल सरफेस, ठीक है. एंड यू प्रोवाइड द पेशेंट विद COCP हैविंग लॉट्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड लिटिल ईस्ट्रोजन. This will suppress the effect of estrogen on the endometrium, and if the effect of the estrogen on the endometrium is suppressed, there will be endometrial atrophy. Endometrial atrophy हो जाएगी तो उससे क्या होगा बेटा? एंडोमेट्रियल टिश्यू जो एक्टोपिक साइट्स पे प्रेजेंट था वो सिकुड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. और इसी तरीके से जो उससे होने वाला पेन था वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो चाहे इंटरकोर्स वाला पेन हो, चाहे ब्लीडिंग के दौरान पेन हो रहा हो, ठीक है, या नॉन मेंस्ट्रुअल पेन हो. और अगर आप इसको COCP को ट्राईसाइकिल करते हैं तो कंप्लीट एमेनोरिया हो सकती है और बहुत ज़्यादा पेन रिलीव हो जाएगा. अगर COCP से सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है तो इसको साल दर साल कंटिन्यू करते रहें, ठीक है बेटा. अच्छा, COCP के अलावा सिर्फ आप प्रोजेस्टेरोन अलोन भी यूज़ कर सकते हैं. ये इतना बेटा देखिए, आपको पता है प्रोजेस्टेरोन का क्या इफेक्ट होता है एंडोमेट्रियम पे? प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन ऑन एंडोमेट्रियम. प्रोजेस्टेरोन जो है एंडोमेट्रियम पे ईस्ट्रोजन को लगने ही नहीं देगा. जब ईस्ट्रोजन नहीं लगेगा तो एंडोमेट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, एंडोमेट्रियम सिकुड़ जाएगा. इतना सिकुड़ जाएगा कि एमेनोरिया हो जाएगी, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं आएगी. टिश्यू सिकुड़ गया तो ब्लीड कहाँ से करेगा, ठीक है बेटा. अब प्रोजेस्टेरोन आप कहाँ से दे सकते हैं? आप ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव्स दे सकते हैं, जिसमें लेवनार्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम आता है, कॉपर आयोडीज आती हैं, या फिर ऐसा डीपू दे सकते हैं, दैट इज़ मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, या फिर लेवनार्जेस्ट्रल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, वही एक ही बात हो गई, ठीक है. प्रोजेस्टेरोन के अलावा बेटा लास्ट थिंग इज GnRH एगोनिस्ट, ठीक है, या दूसरे हार्मोनल एजेंट्स जैसे कि डेनाजोल और गैस्ट्रिनोन. आपको पता है बेटा GnRH एगोनिस्ट क्या करते हैं? GnRH एगोनिस्ट जो हैं पिट्यूटरी पे जाके FSH-LH को कम करा देते हैं, ठीक है. FSH-LH कम होंगे तो ना फॉलिकल्स प्रिपेयर होंगे, फॉलिकल प्रिपेयर नहीं होंगे तो ईस्ट्रोजन भी बंद हो जाएगा. सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन इज द फॉलिकल्स, यूर ग्रेनुलोसा सेल्स, राइट. सो फॉलिकल नहीं बनेंगे तो ईस्ट्रोजन कम होगा, ईस्ट्रोजन कम होगा तो एंडोमेट्रियल एट्रोफी होगी, एंडोमेट्रियल एट्रोफी होगी तो एंडोमेट्रियोसिस जो है वो रिलीफ हो जाएगी बेटा, ठीक है. लेकिन इसका थोड़ा सा मसला ये होता है कि जो GnRH एगोनिस्ट तो दे आर गुड, लेकिन दे हैव आल्सो सम प्रॉब्लम दैट इसमें हाइपोइस्ट्रोजेनिक इफेक्ट हाइपोइस्ट्रोजेनिक स्टेट डेवलप हो जाती है. ये पहले भी मसला डिस्कस किया था कि GnRH एगोनिस्ट यूज़ करने से ठीक है आपके फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते, ईस्ट्रोजन आना बंद हो जाता है, लेकिन यही तो मसला है कि ईस्ट्रोजन आना बंद हो जाता है और बहुत बंद हो जाता है, तो हाइपोइस्ट्रोजेनिक स्टेट डेवलप हो जाती है और ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हो सकते हैं. तो इसलिए इसको हम लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते. दूसरे हार्मोनल एजेंट्स हैं डेनाजोल और गैस्ट्रिनोन, ये भी एंडोमेट्रियोसिस से बचाते हैं आपको, लेकिन इसके कुछ एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वेट गेन, ग्रीसी स्किन और एक्नी का डेवलप होना, ठीक है बेटा. तो दिस वाज द मेडिकल ट्रीटमेंट वी कुड डू to relieve the endometriosis, and none of the above medical treatments could prevent the fertility, right?
Talking about the surgical treatment, fertility sparing surgery. That's really good. That's really good. Fertility sparing surgery. They include drainage and excision of the chocolate cyst. हमने बेटा जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ किए ऊपर, चाहे अच्छा चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। COCP हमने यूज़ किया बेटा, उसने एंडोमेट्रियोसिस को ख़त्म किया। एंडोमेट्रियोसिस को कैसे ख़त्म किया? एंडोमेट्रियल टिश्यू, देखो COCP क्या करता है, उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, ठीक है। और इस इफेक्ट से क्या होता है, इस इफेक्ट से ये होता है कि एंडोमेट्रियम बॉडी में जहाँ कहीं भी होगी ना, वो सिकुड़ जाएगी, एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाएगी। और जब एंडोमेट्रियल एट्रोफी होगी तो ना ब्लीडिंग होगी और ना उसमें इम्प्लांटेशन हो पाएगी। तो COCP देख के आपने एंडोमेट्रियोसिस को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या अब फर्टिलिटी बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा, आपने प्रोगेस्ट्रोजन यूज़ किया, उसने भी यही काम किया। एंडोमेट्रियोसिस को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अब फर्टिलिटी पॉसिबल नहीं है ना, प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से GnRH एगोनिस्ट फॉलिकल्स को मैच्योर नहीं होने देते, एस्ट्रोजन बंद हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस तो ख़त्म हो जाएगी एंडोमेट्रियल एट्रोफी की वजह से, लेकिन फर्टिलिटी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इससे आपकी एंडोमेट्रियोसिस भी ख़त्म हो जाएगी और फर्टिलिटी भी बरकरार रहेगी इसमें, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके, अब फ़र्ज़ करें ये ओवरी है, इसके अंदर चॉकलेट सिस्ट मौजूद है या एंडोमेट्रियोमा मौजूद है। आप सर्जिकल ट्रीटमेंट के जरिए जाके क्या करते हैं बेटा, इसको ड्रेनेज कर देते हैं, इसकी एक्सीजन कर देते हैं पूरे चॉकलेट सिस्ट की। आपने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया। जहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू एक्स्ट्रा मौजूद है एंडोमेट्रियोसिस का, उसको निकाल के उसकी एक्सीजन कर दें बेटा, ठीक है। आप खुद सोचें बेटा, अगर इफ़ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस एंड शी हैज़ दिस चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोमा इन हर ओवरीज, और अगर हम सर्जिकल मेथड के हम डायरेक्ट सर्जिकल मेथड के थ्रू जाके इसकी एक्सीजन कर दें, इसको इंसिजन कर दें, इसको निकाल दें, तो फर्टिलिटी तो बरकरार रहेगी ना बेटा। हमने क्योंकि एंडोमेट्रियम जो यूट्राइन कैविटी में मौजूद है उसके साथ तो कोई छेड़ाछाड़ी की ही नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ इस एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियल टिश्यू जो कि ओवरी में मौजूद था उसको रिमूव किया है, ठीक है। इस तरीके से ना सिर्फ चॉकलेट सिस्ट, बल्कि जो पेरिटोनियम के अंदर भी जाके एंडोमेट्रियल टिश्यू डिपॉजिट होता है सुपरफिशियली, इट कैन आल्सो बी इजीली एब्लेटेड और एक्साइज्ड ड्यूरिंग द लेप्रोस्कोपी यूजिंग डायथर्मी और द लेज़र। जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे ना बेटा, उसका ओवरऑल एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट था। एंडोमेट्रियम जो एक्टोपिकली मौजूद है उस पर भी, और जो एंडोमेट्रियम आपकी यूट्राइन कैविटी में मौजूद है उस पर भी ज़ाहिर है। तो बेटा एंडोमेट्रियल टिश्यू पे इफेक्ट था मेडिकल ट्रीटमेंट का। जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियम है वो तो रिग्रेस हो ही रही थी ना, तो एंडोमेट्रियोसिस ख़त्म हो जाती थी, लेकिन जो एंडोमेट्रियम यूट्राइन कैविटी में मौजूद है वो भी तो एट्रोफिड होती है, तो उस वजह से प्रेगनेंसी फिर पॉसिबल नहीं थी। लेकिन जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो क्या करता है, जहाँ पे एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू मौजूद है ना, जहाँ पे एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू मौजूद है एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, डायरेक्टली वहाँ जाके उसको रिमूव करता है, ठीक है। वो चाहे ओवरी में चॉकलेट सिस्ट हो, चाहे एब्डोमिनल पेरिटोनियम के अंदर वो डिपॉजिट्स हों एंडोमेट्रियम के, डायरेक्टली द सर्जिकल ट्रीटमेंट गोज टू दैट पर्टिकुलर एरिया, remove the endometrial tissue, you should be happy then. You got rid of endometriosis and your fertility is also preserved. Okay, इस तरीके से बेटा। And recurrent risk following surgery is high up to 30%। सर्जरी के बाद recurrences होते हैं, ठीक है। After fertility sparing surgery बेटा, then comes the hysterectomy and oophorectomy. They can also be performed to get rid of endometriosis, but surely they will not preserve your fertility. I hope you are clear with this surgical treatment beta and the medical treatment as well. Then yeah, we are now done with the endometriosis beta. We have then a very short topic, that is chronic pelvic pain. Let me describe this to you.